subjects like economics and finance, which are very dry, more pleasureful for the audiences, I infuse a lot of humor and antics and anecdotal experiences in the learning process to create an environment of understanding, which in my opinion is way more powerful than understanding. The only things that we remember from our lives at school and college and university are our experiences with dealing with different people. Much of the knowledge is flushed out as we progress in life, but those experiences that we instill in students by that people-to-people contact are what remain there forever. At Greenwich, we believe in instilling those experiences to our students by having a wide array of faculty, of which I am one. I think there's a huge disconnect between the skill set that students leave with at the university level and what they're required to perform at corporate level. To meet that disconnect, we at Greenwich Executive Development Center are moving towards creating excellence in honing and polishing our leaders of tomorrow. My name is Ali Sayyid. And the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who's at LinkedIn. I've met somebody who, I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich. There's so many people, they're all over the place. And surprising for a university when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. Assalamu alaikum and welcome to the second episode of I Am You. In the last episode, we talked about what are learning disabilities and what could be done. Or as promised earlier, कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगी जो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे फ्रॉम द आइज़ ऑफ अ डॉक्टर, फ्रॉम द आइज़ ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर शोएब अहमद. ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, डॉक्टर ए.क्यू. खान सेंटर, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. और हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट Maimuna Sadi. I welcome you on behalf of Greenwich University. I welcome both of you to this, and I think ये हमारा पाकिस्तान का स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत बर्निंग इशू बनता चला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस जो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की है वो नहीं होती है. स्पेशली आई वोंट बी रॉन्ग अगर हम ये बात करें कि जो हमारे मासेज हैं, जो हमारे गाँव में रहते हैं या हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, इवन उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि अगर बच्चा फेल होता है, बार बार फेल हो रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नालायक है तो फेल हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपसे मैमुना कि आप बताइए कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि आपके पास लोग आते हैं इस चीज़ को लेके. सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों में पता है, do they come with these kind of problems? Okay, so first of all, thank you so much for giving the opportunity to talk about the very important topic. So I would agree with what you said कि usually हमारे यहाँ लोग जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जहाँ लर्निंग या एकेडमिक फेलियर्स की बात आ जाती है वहाँ पे वो इतना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं करते, किसी प्रोफेशनल से. मगर अब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है एंड हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्कूल्स रेफ़र कर रहे हैं कि वो एक असेसमेंट करवा लें अपनी
अगर उनके एकेडमिक फेलियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या उनकी एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे या उनको क्लास में समझ नहीं आ रहा होता, तो वो यूजुअली स्कूल्स बहुत रेफ़र करते हैं उनकी असेसमेंट के लिए। फिर उसकी मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, ये स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स होंगे कि ना कि गवर्नमेंट? या सो दी प्राइवेट स्कूल्स ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी आई थिंक देयर इज़ अ नीड, बिकॉज वही वाली चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल्स में फिर भी जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को देखा जाता है, गवर्नमेंट सेटअप पे इतना नहीं देखा जाता। सो आते हैं बिल्कुल हमारे पास बिहेवियरल असेसमेंट के लिए, फिर उसके बाद जो है हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है या IQ इश्यूज़ हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको रेफ़र करते हैं या उन पर काम करते हैं। ठीक है। तो ये बताइए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें कौन कौन से लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे ज़्यादा आते हैं आपके पास? कोई एज सच स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन जनरली डिसलेक्सिया के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो कंसर्न भी तब ज़्यादा आता है जब स्कूल में बच्चा जो है वो उस तरीके से बोल नहीं पा रहा होता या वर्ड्स को उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा होता, तो फिर जो है एक कंसर्न जो है वो ज़्यादा होता है पेरेंट्स का या टीचर्स का, तो वो हमारे पास ज़्यादा डिसलेक्सिया के बच्चे ज़्यादा देखे जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल मैं करूँगी कि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, आप who are authorized to give medicines, so do you think you can there any medicines for dyslexia, dyscalculia या ADD, ADHD, कोई medicines हैं जो आप दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया, स्पेशली ग्रीन यूनिवर्सिटी कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर ये जो भी आपका चैनल है आई एम यू, नाम बड़ा अच्छा है, आई एम यू, कि मैं और आप एक हैं और हमें एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। बच्चों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें दवाएं दी जा सकती हैं, हालांकि जो हमारी साइंस है, जो साइकेट्री है, वो थोड़ा सा कॉशियस उसका अप्रोच है कि बच्चों में ख़ास तौर पर उनकी उम्र जो है वो अगर 9 साल से कम है तो कोशिश करें कि दवाइयाँ ना दी जाए, उनको ज़्यादा अच्छा है। मगर जब बच्चा बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसा कि आपने कहा कि ADHD है, ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया है, तो इसमें मेडिसिन का रोल है। मगर इससे भी ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो एक चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं, दैट इज़ चाइल्डहुड डिप्रेशन। और चूँकि डिप्रेशन जो है वो पहले भी शायद आपको इस बात का इल्म होगा कि एक केमिकल डिसऑर्डर है जिसमें काफ़ी सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो वो कम होते हैं, तो बच्चों में भी वो न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं। बल्कि ये भी कहा दुनिया तो जहाँ तक चली गई है कि 1 साल की उम्र के बच्चे में भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो जब 1 साल की उम्र में हो सकता है तो स्कूल में तो वैसे ही जो होगा। अच्छा, ये बहुत अननोटिस चला जाता है, बच्चा सही समझ नहीं रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा अपने अंदर की जंग जो है वो लड़ रहा है, क्योंकि उसको उस डिप्रेशन की वजह से जो चीज़ों को सही तरह से परसीव नहीं कर पा रहा, मगर उस बेचारे को मार पड़ रही है, उसको डांट डपट पड़ रही है, वो होमवर्क नहीं कर सकता, उसको ना घर वाले समझते हैं ना स्कूल वाले समझते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। अब वहाँ पे जो है वो एंटी डिप्रेशन है, बहुत सेफ एंटी डिप्रेशन है जो हम बच्चों को दे सकते हैं और उसके अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट देखते हैं। एक बात। दूसरा, ADHD जो है उसमें ख़ास तौर पर जो स्टिमुलेंट मेडिसिन है उनका बहुत अच्छा रोल है और वो जाके ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जिनको एक्टिवेट कर देती हैं, जहाँ से उसकी सोचने, समझने और पढ़ने लिखने की सलाहियत जो है वो इजाफा हो जाता है और बड़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आती है। फिर एक बात मैं आपको करूँगा कि कभी भी कोई बच्चा जब किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ आता है तो हमें 3 जगहों को ज़रूर देखना चाहिए। उसके घर में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, उसके नेबरहुड में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके स्कूल में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको बहुत सारे क्लूज दे देती है, तो उस पर भी हमें आप लोग टीचर्स को वर्क करना चाहिए कि सिर्फ स्कूल का मसला नहीं हो सकता, उसके घर पे भी हो सकता है, उसके नेबरहुड में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के तो इसको एक इंटीग्रेटेड जो है वो आपका अप्रोच होना चाहिए बच्चे का इलाज करने के। फिर मैं मुझे ये बताइए कि डिस्लेक्सिक, हम बात तो करें डिस्लेक्सिक की और डिस्कैल्कुलिया की, व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्लेक्सिक और किस तरह पता चलता है कि इस बच्चे को डिस्लेक्सिया का ये पेशेंट है, या मतलब वो तो इनबॉर्न ही होता है, आई थिंक बाय बर्थ होता है, तो किस तरह आप लोग किस तरह पता चलता है आपको कि इस बच्चे को है? देखिए, डिसलेक्सिया वैसे तो जो जनरली लैंग्वेज जो है इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, वर्ड्स को वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे, या जो रीडिंग मटेरियल होता है उसको उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते यूजुअली, तो ये है। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैसे पता चलेगा। यूजुअली होता ये है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो फिर
जो है पता चलता है, बिकॉज आपकी रीडिंग तब आपकी समझ मतलब रीडिंग इफेक्ट हो रही होती है। लेकिन अगर आप जनरली पूछें कि हम किस तरीके से इसको पहले से देख सकते हैं, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है कि अगर आपकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं उनमें हम सबसे पहले आपकी जो स्पीकिंग की वो है, ठीक है, लैंग्वेज है। अगर बच्चा लेट बोलना शुरू करता है तो उसमें हम पेरेंट्स को अक्सर ये बता रहे होते हैं कि अब आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, केयरफुल रहना है कि अगर बच्चा लेट बोलना शुरू कर रहा है और या वर्ड्स को देर से याद करता है। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 2 से 3 साल के दरम्यान वर्ड्स बच्चे बहुत जल्दी याद कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चों में अमूमन ऐसे होता है कि वो वर्ड्स को इतनी जल्दी कैच नहीं कर पा रहे होते, डिलेड होती है, डिलेड स्पीच होती है, ठीक है। एंड जनरली माइलस्टोन्स भी डिलेड होते हैं, जैसे चीज़ों को सीखने का अमल जो है वो डिलेड होता है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर स्कूल में है, स्कूल में तो यूजुअली सामने जल्दी आ जाता है, बिकॉज आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या आपके फोनिक्स हैं, जिस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से, ठीक है, तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को जो है डिसलेक्सिया है या जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है यूजुअली इस तरीके से होता है। डॉक्टर आप ये बताएं कि हमारी सोसाइटी बहुत ग्रेट ओरिएंटेड सोसाइटी हो चुकी है, ठीक है, और मतलब नॉर्मल जो नॉन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन पे इतना प्रेशर है पढ़ाई का, तो जो बेचारे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही पिस जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, या आप अपने इसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट को या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठी हुए हैं, जिनको खुद पता नहीं है कि ये होता क्या है, कि किस तरीके से हम उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। कि वो क्या होता है कि बच्चा मैट्रिक में फेल हुआ, उसने कहा कि मैं तो कर ही नहीं सकता, उसकी खत्म हो गई जिंदगी, माँ बाप कहते हैं कि यार तो पढ़ नहीं सकता, ठीक है, उसको निकाल दिया बाहर, अब वो क्या करे। सो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि उन बच्चों के लिए भी रास्ते खोलते भी हैं दुनिया भर में। बुश ने 2001 में तब में किया था नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का, फिर ओबामा ने आईडी ये किया था, जिसमें उसने कहा था कि ऐसे बच्चों को आपने आगे लेके चलना है। और यूएस में ज़्यादातर स्टेट्स में ये होता है कि वहाँ पे बच्चों की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो PhD तक करें। हमारे यहाँ बेचारे वो 7th 8th में अगर आते हैं घसीट पे पढ़ेंगे और उसके बाद पता। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसमें मैसेज ये है कि हमें पहली बात तो ये कि इस पे एक किताब है बड़ी अच्छी, द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स। दैट बुक इज रिटन अबाउट दीज थिंग्स, स्कूल सिस्टम एंड ऑल दोज थिंग्स। होता ये है कि जो आपने पहले बात की थी कि बच्चे पे इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उसके क्लास में 95% या 99% मार्क्स देते हैं, 99% से अगर कम नंबर है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। अब वो उसमें ना सिर्फ वो बच्चा पिसता है, बल्कि उसके माँ बाप भी उसी चक्की में पिसे जा रहे हैं। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बगैर देखे जो ना उनको ग्रेड भी ऐसे ही दे रहे होते हैं जो कोरोना में स्कूल चलाना है, ठीक है ना, तो एक्चुअली वो उनके ग्रेड होते नहीं। वहाँ पर सिस्टम ये है कि बहुत सारे, जिस आपने अमेरिका की मिसाल दी, मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ, तो वहाँ पर उनका सिस्टम ये है कि वो 5-5 का ग्रुप बना देते हैं। जब एग्जाम होता है तो 5-5 का ग्रुप बना देते हैं और ओपन बुक एग्जाम, ठीक है, वो किताब से खोल के उसको देख के डिस्कस एंड देन राइट। और अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है, उस बच्चे की जिम्मेदारी खाली नहीं होती है। तो ठीक है ना, तो जब तक हम आपस में मिलजुल कर नहीं चलेंगे, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो इट विल लीड अस टू रैट रेस जो कि हो गई है, ठीक है ना, उसमें कोई किसी को नहीं पूछता फिर जो है, ठीक है, वो अपने उसको लगा रहता है, मगर उसका जो स्ट्रेस है उसको खा जाता है। जब आप सोचो कि 4 बच्चे 5 बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हो, इकट्ठे बैठ के एग्जाम दे रहे हो, तो उनके अंदर कितनी कोहेजन हो जाएगी, उनके अंदर आपस में एक दूसरे को देने का लेने का, और ये जो सोसाइटी के अंदर चीज डेवलप होने की कहाँ पहुंचेगी। मतलब उसमें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा है, जो कहते हैं कि ग्रुप वर्क में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। तो आई थिंक उसमें आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मैं एग्री करूँगी सर की बात से, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली कोई ऐसे सिस्टम नहीं होते स्पेसिफिकली अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के लिहाज से बात करें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे फिर भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से ऐसे कोई स्पेसिफिक स्कूल्स नहीं हैं। जैसे इसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एंड जैसे भी सर ने कहा कि अगर इनिशियली आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे दें और फिर ग्रुप्स में उनको लेके चलें तो वो बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए भी और जनरली भी कि बच्चा कोप अप कर रहा है, ना कि आप उस बच्चे को बहुत स्पेशल
एजुकेशन स्कूल में डाल दें जहाँ there are different students or children studying with the mental health issues, वहाँ पे भी उसको जाहिर सी बात है वो मसाइल का शिकार होगा। मैं इस पे एक चीज़ का इजाफा कर दूँ, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस पे बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, सुना है ना हम सबने जो ये बात। होता ये था कि जो स्कूल्स में जो प्ले ग्राउंड हुआ करते थे, अभी तो बहुत वो खत्म होते जा रहे हैं, उसका मकसद ये होता था कि वहाँ पर जो है वो जनरल का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है ना, सिपाही का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, चौकीदार का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, एंड दे आर प्लेइंग टुगेदर, ठीक है। अब जब वो गेम में जाते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो हॉकी खेल रहे हैं, या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर ऑल अलाइक। उनमें ये नहीं है कि वो फलाए तो फलाए, उसको चोट लगती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उसके, तो उसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो उसमें वो बर्दाश्त का मादा आना, कॉम्रेडशिप का मादा आना, ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है, ये हमारे स्कूलों में बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत काम होना चाहिए। और आई थिंक कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें बड़े लूपहोल्स हैं, इन द सेंस कि हम एक लाठी से सबको भागते हैं, ठीक है। अब हम उन बच्चों, अब एक A+ स्टूडेंट है जो कि बहुत जीनियस है, उसको भी वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एक डिस्लेक्सिक या ADD या ADHD वाले बच्चे को दे रहे हैं, तो यू कैन नॉट मैच, वो नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। वो हमारे ना स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, ना हमारी गवर्नमेंट समझती है, और ना हमारी हायर अथॉरिटीज इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक हम उसको स्टैंडर्ड दे देते हैं कि हाउ फास्ट अ फिश कैन क्लाइंब अ ट्री। एग्जैक्टली, अ फिश कैन नॉट, वो नहीं समझते ना। हाँ, तो उसको भी समझते हो जो वो फिर वो बस उसी लाठी से आते रहते हैं। जी बिल्कुल, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल, Greenwich is really grateful that you guys have given us your precious time। मैमूना डॉक्टर साहब आपका भी, और बहुत बहुत लास्ट कुछ आप मैमूना कहना चाहेंगी ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे हैं या टीचर्स के लिए, एक जुमला दोनों से? आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को वैसे ही वो स्टिग्मा की नज़र से देखा जाता है। सो यूजुअली पेरेंट्स, अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इसीलिए नहीं लेके आते क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच है ना, कि कहीं आगे जाके ये ना सुनने को मिल जाए कि अच्छा स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए जो है की वजह से ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम इसी तरीके से स्टिग्माटाइज करते रहेंगे तो हम फिर अपने बच्चों के साथ आई थिंक फेयरली काम नहीं कर पाएंगे। सो हमें जो है उनको जो उनकी नीड है उस पर काम करना चाहिए, ना कि हमें एक सोसाइटी का एक वो देखना चाहिए कि अच्छा लोग क्या कहेंगे। सो आई वुड जस्ट से दिस के आई थिंक हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटीज, इनको फोकस करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ इतना नहीं हो रहा। मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि हमें जो वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम द डिसऑर्डर्स जो बच्चों को होते हैं, ठीक है। हमें जो वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाएगी, वो उसको खा के ही जाएगी, ठीक है। इस बेटर कि हम आंखें ना बंद करें बल्कि हम फेस करें उस सिचुएशन को, चैलेंज को, और आप देखेंगे कि लोग बहुत हेल्पिंग है आजकल। अगर आप किसी के पास जाते हैं अपने बच्चे की इस तरह के इश्यूज के लिए, तो आप बड़े हैरान होंगे कि लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत नॉलेज आ गया उनके अंदर, और ये है। थैंक यू सो मच। हमने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, और 2-3 चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये कि एक तो स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए इस चीज़ को, सेकंड ये कि अवेयरनेस लोगों में आ गई है, लेकिन स्टिल आई बिलीव के जो हमारे जो विलेजेस वगैरह हैं या हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है, तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी यही कहूँगी कि खुदारा ऐसे बच्चों पे इंडिविजुअल अटेंशन दीजिए और उनको एक ही लाठी से मत हारिए। थैंक यू सो मच। I have to say, I'm just so impressed by this institution. It's been a wonderful visit. I came with colleagues based here in Karachi and also based in Islamabad. I live in Islamabad and I get to visit Karachi about once every month or once every 2 months, and I get to visit schools. But it's rare to find, to get to visit a school where it's so welcoming and such high quality presentations
and faculty and students. And the students, I must say, were incredibly engaging from the moment that we walked into the auditorium. There were claps and questions, and it's been a wonderful visit. So, my job as Canada's Senior Trade Commissioner is to facilitate partnerships between Pakistani institutions and Canadian institutions. So when I say partnerships, that can be in the form of student exchanges, faculty exchanges, and general research. We would love to promote Canadian educational opportunities to Pakistani students to see more student mobility in going to Canada, and ideally in having Canadian students come here. And I came here today to tell Greenwich students about Canadian educational opportunities, to answer questions, and to hopefully increase and support our future partnerships. The students of Pakistan have limitless potential, undoubtedly. I think today we were talking to undergraduate students who are potentially interested in going abroad for master's degrees or PhDs. And what we were telling them is that there's lots of opportunities in Canada and of course other countries, but also here in Pakistan. And my vision, my aspiration for Pakistani students is to find their own passion and then find the opportunities that meets those passions, whether that be here in Pakistan or in countries like Canada. Really, we just want talents to flourish and people to find joy in what they do. I adore Pakistan. I actually came to Pakistan a year ago, but it wasn't my first time in Pakistan. I visited Pakistan, actually, if you'll believe it, 20 years ago. I was a backpacker before I even started university. I traveled here by myself and traveled across the country and fell in love with Pakistan. I fell in love with the geography and the mountains up north, of course. I fell in love with the people, and of course I fell in love with the food. And I decided that it was my dream to be able to return to Pakistan one day and work and ideally be representing the government of Canada. So it's really my dream come true to be here. And it's a real honor to be able to work to support partnerships in educational institutions and between educational institutions and businesses in Pakistan and Canada. Pakistani food is, I think, the best food in the world. Although I sometimes surprise Pakistanis because I'm vegetarian and they look at me with horror when I ask them for sabzi and hold the meat. But that being said, there's so many options for vegetarians in Pakistan that I think Pakistanis don't even realize. I will probably say my favorite is like a really good palak paneer, but I will try absolutely anything. ये किस पे तावीज कर रही हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? ये किस पर तावीज कर रही हो? किसको पाने के तजीफे? जो तुम कर लो ये किसका सारा? तो मैं तुम्हारा. There was a secret chord that they would play and please the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, for the fifth. सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईया फिर साथ
ऐसे नजरों से अल्लाह बचाए, हुमा जमानों से अल्लाह बचाए। चलो पार्टी सारे Rap shows ready to blow. Na karo compare. I never give a damn and I still don't care. Real eyes सामने तो fake disappear. गैर यहाँ अपने और अपने यहाँ गैर। हाँ ये उसका बाप है और वो उसका बाप है। पंजाबी रैपर सारे वो है मियाँ को छापे। इस बात के कितने भरम हाशिम नवाज ने वाइट जेट बने। I wonder what you are. Up the world so high, like a diamond baby in the sky. Yes, welcome everybody. कराची आके आपके लिए परफॉर्म कर रहा मैं। अभी जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा उस दिन आऊंगा आपको एंटरटेन करूंगा। Put your hands up everybody. किस पे मैं करूं किस पे है हारी। No, so mad for some work later 1 second I'm gonna make it like another do some more so wanna rap it. GREENWICH Greenwich in the house and everybody thinking it dead. Remember privilege. So, like Margaret, I was here in Pakistan 16 years ago on working as well in Islamabad. I went to Kareemabad in the north, and out of all the places I've been in the world, I still find it to be one of the most beautiful places I've ever been, and I immediately returned to it within the first 4 weeks of coming back to Pakistan. One of the main reasons we're here today is to initiate a new program where we're expediting students who are looking to study in Canada. And so today was mostly spent talking about how to apply to study in Canada and what the requirements are and how people can meet those requirements and eventually study in Canada. I see an immense future for Pakistani students in Canada, and that's one of the reasons why we've introduced this program to Pakistan. Very recently, in the last few months, we expanded it to Pakistan simply because we do see that extreme potential for Pakistani students. So being a student or working temporarily in Canada is often the first step to becoming a permanent resident in Canada and then eventually a citizen. So by studying and working in Canada, it makes you an ideal candidate to immigrate to Canada as a permanent resident and then eventually obtain citizenship. I find the environment to be extremely professional and indicative of a top-notch university with extensive practical and theoretical programs. I would say one of the issues that has come up today is about what they think are the jobs of the future, and looking at their future in terms of what those jobs will be. When, to me, I'm more inclined to follow a passion, an interest, and pursue it to the best of your ability, rather than trying to change your interest to meet a particular niche in the future. But yes, I do love kebabs, but the prata, the bread, the fried bread, is I can't stop eating. Hi, I am Kunjal Akhtar Channer and I am a proud alumni of Greenwich University. The idea of becoming an entrepreneur was always there, but the courses that Greenwich University taught me gave clarity to my vision. Sir Farhan's entrepreneurship class at Greenwich University is still fresh in my mind, where I presented my business plan for Inchitape in class, and today it's a reality finally.
My degree helped me get clear on the fact that I wanted to end up as an owner rather than becoming an employee. It polished my leadership skills through providing me with opportunities through various projects at Greenwich University. I started off Inchitape as an online store back in 2014 when I was still a student at Greenwich University, pursuing my bachelor's degree then. And later on, I opened my outlet at Zamzama, which is this. And currently, mashallah say, the word of mouth landed my brand to various parts of the world, especially in UAE, UK and USA, and now that I'm looking forward to opening up new branches. Unknowingly, teachers instill those qualities in you which we as students tend to realize later in life. So I'd request you all to please value your teachers while they're with you on the campus. Initially, I was assuming कि online classes resume करना या continue करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा और कैसे होगा. But due to hard work and smart work of Team Greenwich and faculty, सारी चीज़ें बहुत easily manage हो गई. The teaching strategies that were used by the teachers were according to the students' needs, and the management was always there to help us in every way possible. As these were difficult situations and times, but the teachers made it easier for us to learn and understand. Regardless of fact I'm at university or at campus, Greenwich level up their game even in this pandemic. And online classes में कोई chaos या कोई haphazard बिल्कुल नहीं होता. I really enjoy it. I just want to thank my university's management for tackling this pandemic situation so well. Hats off Greenwich University. They made a portal for us, GEMS portal, जिस पे इन्होंने हमारे एग्जाम्स कंडक्ट किए. हमें लगा था हम चीटिंग कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, कॉपी से देख लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, बट इन्होंने वो चीज़ को इतना बेटर कर दिया था कि हम वो कर नहीं पाए. और अनफॉर्चुनेटली जो मार्क्स आए वो हमारी अपनी मेहनत पे आए. I want to appreciate the efforts of the team which led to the completion of this semester in an ongoing pandemic. Thank you to the Greenwich team. Proud to be a part of Greenwich University. Thank you for all. Thank you so much. Greenwich is like a home. Thank you for everything. Thank you, Greenwich. I welcome you all on behalf of Greenwich University to this webinar session. The pandemic has sent shockwaves across economies affecting agriculture, industry, as well as services sectors, bankrupting businesses around the world, causing millions of job losses across regions. I think some businesses are doing well because they have tried to adapt to the situation. Think about e-commerce as an additional dimension to every business. Is there a potential for it? All of us know that the COVID-19 pandemic has touched upon every life across all the continents. Countries like Pakistan, like India, Bangladesh, they can't have longer lockdowns. The government does not have the resources to support the masses. Several questions have risen while neither there's a definitive endline for COVID-19 nor a scientific conviction on the possibility that there are no other viruses like this. You understanding the leverage of providing your product, your service in a virtual environment increases your market, because when you restrict your space, you restrict your place. You know, you have to see the problem, you have to decide, and you have to work on the solution. We'll have to think, how can we reach our customers? How can we go to them? Now they can't come to us to an extent. Companies are also promoting the work from home culture. So if COVID is a global problem, I see that every business owner should also see it as a matter of fact, as a potential raw material for innovation and creativity in order to begin to align themselves
towards new models of service provision or product development to actually provide those products? Many MNCs, they are now creating a fund for this COVID-19 support. It's not only for your own country, it's like for MNCs. Their shops are closed, there's no income, they have to pay rent, they have to pay utility bills, because these guys are not going to let you go. And there's nothing coming from government. Most of the time, don't find the time to actually research more and study more on that subject matter. We can't wait for another 6 months to take a decision. Now the decision has to be taken now and today. So I think every company needs to invest in IT because this really would go a very long way for them. Even if pandemic, if they're over with COVID-19 and if they're beyond, they just cannot live without IT efficiency anymore. All the plans were successful just because of the technology. Hello everyone, welcome to Greenwich University Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. My name is Amit Prem and I'm very glad to host you all since I have been to your campus, and to be very honest, your campus is beautiful and Moshad itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they are very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People. If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here and then you can know your status, check your courses, your timetable and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department and so this is very, very important. And like we mentioned before that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' head. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia. And under this Language Academia, we learn three different languages which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is
executive development program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, you know, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our media lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have 2 cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. जो इम्पैक्ट ग्रेनिच ने क्रिएट किया है इतनी सारी लाइफ्स के ऊपर, उसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. The lovely time that I had, जितने भी मसाल गुजरे, वो देखो ये जो कॉलेज टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा. और इतनी अच्छी फैकल्टी और इतने अच्छे जो ओनर्स हैं और एडमिन हैं, और सईद साहब, सीमा जी तो हैं ही हैं, बाकी जो टीचर्स हैं सारे, ये आपको फिर नहीं मिलेंगे. The people who were there at that time are the same people who are there till now, and that really shows a fantastic camaraderie as a family is concerned. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठे यार HBL के वेल्थ मैनेजमेंट है, वर्क विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो वो मेरा पहले माय ट्रिब्यूट टू ग्रेनिच के साथ जो टाइम स्पेंड हुआ है, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट, इफ आई कुड गो बैक आई वुड गो बैक टू दैट पर्टिकुलर those particular years of my life. Yes, इन्होंने हमें बनाया है. They've made us who we are. They've taught us what we know. ग्रीनिच में आके I really improved a lot, और उसका रीजन ये था कि पाकिस्तान के जो बाकी सिस्टम थे वो बहुत ही रट्टेबाजी वाली सिस्टम थे कि आपने एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा लगा लिया और आप गए और आपने मार्क्स ले लिए. ग्रीनिच में ऐसा नहीं था. इट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस फॉर मी. आई थिंक कमाल साहब और मैडम सीमा और सईद साहब की वो थी कि they really brought best teachers and best staff, and what a teamwork. So really indebted to Greenwich for such a great experience. Greenwich was a one big happy family for us, because I mean all the faculty and the admin staff, we all knew each other so well that we could easily go and talk to them very. Transformation, adaptation and actualization is what we humans must do. The new normal is the new norm, and we should learn to embrace it by practicing social distancing, staying 6 feet apart and avoiding close contact, and also sanitization of our hands and wearing masks.
Greenwich has always put the interests of its students first, and that's why they've provided sanitizers at every social point on campus, starting with the main entrance and in the lobby. Also, the campus is disinfected every day. Greenwich University is providing hybrid learning facility. Students can attend the classes at their home as per their convenience, or they can attend the campus. For this purpose, if they would like to attend the campus, they can register themselves at the Greenwich Blended Learning Management System. Just log into the learning management system. Go to the student secure desk. Click on Reserve under Blended Learning. See if the capacity is still available in your upcoming classes. Click on Reserves. You are done. For me personally, I'd say I'd prefer coming on campus and studying because it's less monotonous for me rather than me staring at a screen the whole day. Technology can't substitute, human contact. I mean, we are avoiding contact, but it's better for me to actually look at a teacher while he or she is explaining something to me, because it makes more sense that way and I can understand it better. Let's not forget to maintain the SOPs that we've been told to follow by using proper sanitization, wearing a mask, and avoiding close contact with each other, or else we'll be back to square one. everybody, this is Fatna Wakar. I'm doing my bachelor's in media sciences at Greenwich University. My experience at Greenwich has been amazing since the past 3 years. Academically, our teachers, the staff, they put their immense hard work and dedication towards their work. In extracurricular activities, Sir Said Mughal provides us training for badminton at Beachu Club. I'm a regular badminton player here, and we train 2 hours in the morning through Sir Imran. He's our coach, and I have won several different accolades representing Greenwich in inter-university tournaments, and I train hard to achieve my goals and to move my game to a complete next level. I welcome you all to Greenwich University, and I would be really happy and glad to see you guys with my badminton team. Thank you very much. My name is Mohammad Hamzanwar, currently the youngest national swimming champion of Pakistan and a proud student of Greenwich University. I started my career at competitive swimming at the age of 10 while getting inspired by my elder brother Anik Hanwar, who was the ex-national swimming champion of Pakistan. Greenwich University have supported me in every platform up till now and have given me opportunities to enable my further dreams and achievements. Greenwich University sponsor me in local and international tournaments
where I can achieve my dreams. I was the youngest national swimming champion of Pakistan. In 2019, I participated in South Asian Games where I represented Pakistan in Nepal. So it's a very proud feeling for me to represent my country and my university, Greenwich University, and to make them proud. Thank you so much, Greenwich University, for doing everything for me up till now and supporting me very much. Hello, Assalamu alaikum. This is Nakia Nadeem and I'm part of the Greenwich fraternity, and I can proudly say that I'm part of the Greenwich Dean List as well. This was a roller coaster ride for me, and it has been an exciting and adventurous ride, and I would like to wish the future students who are coming to Greenwich that they won't regret the decision. It would be the best decision of their life, and Greenwich has always leveled up their game, being in the campus life or the online class. There is no haphazard or chaos. I really enjoyed the online examination. Thank you and best of luck. The world is changing and so are the tools of learning. The transition from face-to-face classes to online sessions wasn't smooth. It was different, but it wasn't difficult. हम लोग used to थे teachers से बात करने के लिए, interact करने के लिए, आपस में students बात करें, लेकिन then it happened through the screen. So we had to talk to the teacher from the laptop screen. It wasn't organic. Since I'm a very adaptable person, so I had to fix my routine around it. So now I'm pretty comfortable taking online classes from home. It's actually fun if you think about it. I mean, now I don't have to dress up. I usually take 2 hours to get my hair and makeup done. I now take my online classes in my loungewear. You know, the best part is कि साथ-साथ classes चल रही होती है और मैं साथ-साथ खा भी रही होती हूँ. I'm usually sipping on my coffee. I love cooking. I love experimenting on different recipes and trying out different food. Since I work, so पहले classes भी होती थी, काम भी होते थे. I used to get home pretty late. अब टाइम मिलता है घर वालों के साथ बैठने का. We all sit together, we talk and we play different games, we explore, we watch movies together, so it's fun. I usually go to the corner of my house, my terrace, and I read, I sip on my coffee. This literally helps me clear my head. All I know is when this pandemic will end, our world will be a different place. But we have to come out stronger on the other end. My name is Sana Kesar and I am proud to be on the Dean's List. Hi, my name is Tariq Zeri Baloch and I'm glad to see my name on the Dean's List this semester. This has been quite a ride for me because how this pandemic blindsided the whole world, resulting in universities adapting online courses. You get to create your own environment. आप सुकून से अपनी मर्जी से अपने क्लासेस दे सकते हो. Obvious सी बात है यार, I miss my campus life, I miss my activities जो मैं यूनिवर्सिटी में करता था, I miss my friends. But इससे एक ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस खोला है और उसको मैं बड़े इजीली टाइम दे पाता हूँ और उस पर ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ. The best thing that has happened कि I can also focus on my fitness as well. इस सिचुएशन में जिस तरह हम सब अपने घरों में बंद हैं, तो खुली हवा में आकर एक्सरसाइज करना मुझे ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है. मुझे काफ़ी टाइम से किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन पहले टाइम नहीं मिल पाता था इस चीज़ के लिए, बट अब मैं अपना ये शौक़ बड़े अच्छे से पूरा करता हूँ. कभी कभार मैं घर पे सेम रूटीन से बोर भी हो जाता हूँ, तो इस बोरियत का स्केप है गेमिंग. मैं GTA 5 खेलता हूँ, PUBG खेलता हूँ और कभी कभार भाइयों के साथ CSGO भी खेल लेता हूँ. तो इस दौरान मैं अपना टाइम इस तरीके से गुजार रहा हूँ. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम इस सिचुएशन को जितना जल्दी अडाप्ट कर लें उतना बेहतर है,
क्योंकि हमें से किसी को आइडिया नहीं है कि ये पेंडेमिक कितनी देर रहेगा. So guys, stay safe, stay home and take care. Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note. This is your host Umar Khan and I'm back with another episode. और जैसे आप लोग जानते हैं लाइट नोट पे फैकल्टी सीरीज़ जारी है और आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ. मेरे चेहरे की रौनक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना आज के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ. उसकी वजह ये कि हमारे आज के गेस्ट मेरे भी उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं. ग्रीनिच के अर्ली डेज से ही इज़ पार्ट ऑफ ग्रीनिच. इनफैक्ट 1989 में जब कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस वक्त हमारे आज के जो गेस्ट हैं जिनका मैं नाम बिल्कुल बताने वाला हूँ, उन्होंने अपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल की 1993 में. He became a part of Greenwich and since 1996 he has been teaching at Greenwich on and off. और आज भी कई इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा रहे हैं. गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपनी फील्ड में. कंप्यूटर के वो माहिरीन में से एक जो कि हम लोग सब जितना कंप्यूटर सीखें वो हमारे सर से सीखें. हमारे साथ मौजूद हैं आज सर अकील अहमद. वेलकम टू द शो सर. होप यू डूइंग वेल. Thank you very much. Assalamu alaikum Umar. Thank you very much for inviting me here. वालेकुम सलाम सर. एक्साइटमेंट तो मुझे है और थैंक यू आपका कि आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से. कमिंग बैक टू ग्रीनिच आफ्टर ऑल दीज इयर्स, कैसा लग रहा है? It's like my second home. I have a feeling that I'm at my own place. एग्जैक्टली यही एक जो हम बात करते थे हमेशा ग्रीनिच फैमिली की. और जैसा मैं जिक्र किया 1993 से आपका ग्रीनिच से एसोसिएशन रही और आज भी ग्रीनिच से बिल्कुल एसोसिएशन है, क्योंकि अभी भी दुआ करनी होती है मिलाद में तो अकील सर आते हैं और आपसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात रहती है. बट सर बैक इन 1993 कंप्यूटर्स का सेंस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी. आपका शौक़ कंप्यूटर का कैसे आया? टॉक अस थ्रू दैट. Umar, if I look back, तो मुझे जब पता लगता था कि कहीं कोई एग्जीबिशन हो रही है किसी 5 स्टार होटल में तो मैं चला जाता था और फिर वहाँ से मैं ब्रोशर्स वो इस तरह कलेक्ट करता था. और पैशन था कि वो घर पे आना और फिर उसको पढ़ना और फिर न्यू डिवाइसेस देखना. और फिर उस ज़माने में मैगज़ीन बड़ा रेगुलरली पीसी कंप्यूटिंग आता था, पीसी वर्ल्ड आता था, जब भी है आई एम श्योर कि उसको आप रेफ़र करते थे और वो नई नई चीज़ें आपको वहाँ से मिलती थी. तो वो मैं बड़ा रेगुलरली पढ़ा करता था. मैं थोड़ा ग्रीनिच से पहले की भी बात करूँ कि हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं ग्रीनिच के, तारिक नियाजी साहब जी. He's such a nice guy. He was my first instructor who taught me ABC of computers. Wow. It was back in 89 when I was studying in intermediate, I think, and at that time Tariq Niazi Saab used to work at JAC Computer. In fact, he was the managing director there. It was his own company, so I got a chance to work with him there. And he taught me the basics of computers, so that was the start of using computers actually. क्योंकि वो ज़माना ऐसा था उमर, मैं बताऊं कि आप अगर कहीं सीखने भी जाते थे कंप्यूटिंग तो वो क्लास रूम में इंस्ट्रक्टर जाते थे एंड स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू टच द कंपोनेंट्स. बिल्कुल. तो आप बाहर से खड़े होकर सिर्फ वॉच कर रहे होते थे और आप उनको देख रहे होते थे वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, बस ये आप ऑब्जर्व करते थे. एंड वाज अ टाइम when a student used to draw keyboard on a piece of paper and they used to practice. So computer wasn't common. So then onwards, I got a chance to join Greenwich University back in 1993. So वो 1993 में as a data entry operator join करना और फिर यहाँ पर सारे चीज़ें देखना और फिर उसके बाद I must say that I'm very thankful to Madam Seema Mughal and Saeed Saab who gave me an opportunity to work here and they had confidence in me. और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक सिलसिला जारी है. और फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर से जॉब शुरू करके और फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आना और फिर वो साथ साथ पढ़ाई भी जारी थी और फिर वो सीनियर प्रोग्रामर और फिर डिपार्टमेंट हेड बन जाना और फिर काफ़ी सर्विसेज यहाँ पर जो है वो देते रहे. और फिर इफ़ यू रिमेंबर कर्नल फैजुद्दीन साहब एंड माइकल ग्लेडल साहब. So these were the two program directors and they used to come to me for help at different time. And time came up when they both came to me together and they were like, भैया कर्नल साहब का स्टाइल कुछ ऐसा था कि भैया अकील
yeah, I'm 60 years old or more than that, and you have taught me, so why don't you start teaching at Greenwich? So it was like something new for me that, you know, I never thought about teaching at the university. I never believed in that कि यार मैं कर भी सकूँगा कि नहीं. But the kind of confidence Madam Seema Mughal, Colonel Saab and Michael Gladwell gave me at that time, it was amazing. It was amazing. So Greenwich has given me a lot of confidence, and I must say thank you to these people. They were great, and with their help today I'm here, and you can, you know, whatever the credit goes to these people. Absolutely. बाकी मेरी इतनी मेमोरीज हैं जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 2013 में जब मेरा मास्टर्स चल रहा था तो आईटी मैंने भी सर अकील से ही पढ़ा है. इनफैक्ट मेरे जो बहन भाई हैं उन्होंने भी ग्रेनेड से ही पढ़ा, और 2003-2005 के टाइम में उन्होंने भी आईटी सर अकील से ही पढ़ा. देयर आर ईयर्स बैक, वी कैन गो ईयर्स बैक, जब कितने स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे, वो सारी सर अकील की मेमोरीज आ रही होगी. MS DOS के हमें कमांड्स याद आते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई सर 90s से अब तक. जैसे आपने बताया कि पेपर के ऊपर कीबोर्ड ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते थे, और अब तो बच्चों को कदर ही नहीं है. और आपने इस टाइम पीरियड में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और फिर ये कोविड. तो talking through the decades, 90s, then the 2000s, and then 2010s, and now the 20s, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस आईटी की डेवलपमेंट में देखी, टेक्नोलॉजी में देखी, और उससे रिलेटेड वो पहले के स्टूडेंट्स जो मेहनत करते थे और अब जो इतनी आसानियाँ हो गई हैं, उन बच्चों के लिए और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपने नोटिस किया? See, I saw a technological revolution during this period of time. जी. If you compare that DOS disk operating system that you recalled, so in that you had to write down very long command to create folders and store files in the folders, and how easy it is in Windows that you simply use few clicks and you do that. So I personally feel that it was too tedious at that time. And it wasn't easy to, you know, memorize those things. So there was a lot of memorization process that was needed. And today, I think this computing is much easier. But when it comes to programming, so your mathematics have to be really very good, and logic building is required. So programming comparatively is getting more advanced, whereas the basics of computer, that has changed a lot. You see a lot of new things in it. You see colorful screen, enjoyable softwares, you see sound effects also. So these were the things which were not there before. And you don't have to wait for hours and hours for the internet connection. वो आवाज़ जो खास तौर पे आती थी ना, टी वाली केबल नेट कनेक्शंस. इनफैक्ट अभी उस ज़माने में तो जब आपको जब क्लोज करना होता था ऑफ टाइम पे, so we used to take out the plug and this is how we used to turn off computers. जी. हाँ, या पावर का बटन चले तमीज़ से अगर प्रेस भी करते थे तो आप प्रेस कर लिया करते थे. पर उस दौरान अगर कोई फाइल्स आपकी ओपन रह जाती थी तो वो डैमेज हो जाती थी. और आज तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ज़बरदस्त आ गए, लाइक टू एफिशिएंट that even if you just simply close it, or you simply give a command to shut down your computer system, so all your files are closed automatically by operating system itself. So this is how the time has changed, that new application that were introduced in the market. These are the things that have been embedded in the software that provide full safety, security to the user data, user files, that if you forget to do something, the computer will take the responsibility and do it for you. So इंसानों को ही रिप्लेस कर दिया, अब यही एक कमी रह गई है. वैसे तो लोगों ने अब जापान में तो शुरू भी हो गया कि लोग अब इंसान को छोड़ के कंप्यूटर को ही घर ला रहे हैं. Well, I always say that the time would come and there will be probot, not robot. Yeah. I repeat, there will be probot, not robot. Already there are robots around the world, but not very accessible for common people. You're right. It will become an essential component of everyone's life. I mean, they will be pampering our kids and they will be our security guards, and time would tell you that. अभी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ज़माने में जब वो सेल फोन्स आए तो लोगों ने कहा यार ये कौन यूज़ करेगा. Exactly. और आज हम देखते हैं कि you can't live without your cell phone and you spend most of your time with your cell phones. Even आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले you pick up your phone and in you fact, check what if you messages forget are. your phone at home, तो life feels like it's incomplete, और एक disorder हो गया है कि बार बार जो है ना फ़ोन को देखना कि कितनी नोटिफिकेशन आई है. सर अब ज़रा थोड़ी मेमोरीज पे बात करते हैं. आपकी बेतहाशा मेमोरीज हैं starting from early days. So what is your favorite memory? Because there are so many, hard to choose one. लेकिन कोई एक ऐसी याद जिसको आप बोलें कि ये stand out है when it comes to Greenwich. Yeah,
when there's a span of time when I see how the change has come. So one thing that is striking in my mind, if I recall that day when I used internet for the first time. Yeah. So I'll just share this story with you. कि वो Digicom company थी, they were the first internet service provider in our town. और Digicom company के delegates उस दिन ग्रेनिच आने वाले थे. अच्छा ये year भी बताइएगा. Yeah, I think it was probably, I don't remember exactly, but it was I think 1994, I guess 95. 95. And internet was not common at all, and we never heard of Yahoo, and then at that time search engines that were common were Alta Vista and then Yahoo, and email was not common for the people. So we were desperate to see how the things are done. तो वो Digicom company के delegates आते हैं और वो बड़ा अच्छे से ड्रेसअप होके और वो गार्ड्स के साथ आते हैं और फिर हमारे ग्रेनिच के पूरे delegates मौजूद थे उस वक्त. और फिर इतनी बड़ी सी वो गैदरिंग है एंड पीपल वर डेस्परेट टू सी हाउ इंटरनेट वर्क्स. तो वो आते हैं और वो कंप्यूटर पे एंटर करते हैं www.yahoo.com एंड वी सॉ दैट फर्स्ट टाइम व्हाट दिस हाउ यू एक्सेस याहू. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि वो साइड पे एक ग्लोब बना था और वो आइकन ऐसे रोटेट कर रहा होता था स्क्रीन पे. तो अब पीपल स्टार्ट वॉचिंग इट कि यार ये कब खुलता है. और वी वर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड इट टुक लॉन्ग. So Madam Seema Mughal decided to go for the lunch. तो फिर सारे लोग लंच पे चले गए और फिर लंच के बाद वापस आए, फिर चेक किया, पता लगा जी अभी भी लोड हो रहा है. तो उसके बाद टी ब्रेक पे चले गए और उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो याहू का पेज जब स्क्रीन पे खुला है तो इट वाज बिट इनटू पीसेस कि वो इनफ फ्लैश नहीं खुलता था. वो आज भी इनफैक्ट खुलता ऐसे ही है कि वो ब्लॉक्स में खुलता है, बट internet speed has changed a lot. There was a time it was BPS, bit per second, and when I say bit per second meaning एक 0 और 1 जो होता है it's like bit per second, and today we talk about Mbps और उससे भी millions of आगे bits per second और Gbps gigabits per second और फिर उससे भी आगे की हम बात कर रहे हैं 5G की. So अब जो है वो time has changed that you enter a website name and it appears in a flash. So ये वो टाइम था कि आप लंच भी करके आ गए और कई घंटे आप गुजार कर आए. ये लोग कहते हैं ना कि आजकल के बच्चों से कि पेशेंस नहीं है, तो आप लोगों का तो वो दौर है जहां आप एक साइट खुलने के लिए 6 घंटे 7 घंटे का वेट करते थे. अब तो ऐसी मैंने 14-year-old वो घर पे जब गेम खेल रहा होता है तो he's like, yeah dad is giving me only 60 FPS so I want the new graphic card and you go to the market to purchase a graphic card and you feel like oh my god. You have to spend like 80,000 rupees and 70,000 rupees to buy a graphic card, and that was the time, you know, when you get a PC in that price. Absolutely. So many memories. Sir, Greenwich की तो आपने ये memory एक share की. Now, बेतहाशा student, like you have taught thousands of students here at Greenwich only. बाहर का तो मैं count ही नहीं कर रहा. कोई चंद एक ऐसे student जो याद रह गए हों, जो आपके favorites हों? यार बहुत बड़े-बड़े नाम हैं और जो शायद अपने उस ग्रेनिच के तमाम पीरियड में इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आज उनको बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया. आई वोंट गिव द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन वो फैशन डिज़ाइनर हैं इस वक्त के, कोई टीवी मॉडल्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि बड़े जीनियस थे. और जैसे एक स्टूडेंट के मैं शेयर करूँ, रफ़ीक रोशन अली करके एक स्टूडेंट होता था, एंड वो ऐसा होता था कि एक सेमेस्टर आता था और फिर एक सेमेस्टर नहीं आता था, या 2 सेमेस्टर के लिए आया और 2 सेमेस्टर गायब. अब उसको पूछा हमने जब वो वापस आया कि रफ़ीक हमें यू आर enrolled in the university as a bona fide student but I don't see you regularly, what's the reason behind it? तो वो कहता था कि सर I have to work, I have to earn and then learn. Wow. So after every 2 semesters I go back to Canada. Over there I work and I make money for a semester or for 2 semesters. Wow. And I come back here and I spend that amount of fee to complete ये back in the 90s की आप बात back करें. in the 90s की मैं बात और कर रहा हूँ. आज चल के हम कितने क्या बोलें स्टूडेंट्स को कि कितना वेट नहीं करते. सर जो कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम लेकिन बातें बहुत हैं, सो आई जस्ट क्विकली जंप टू द कोलीग्स पार्ट क्योंकि एक ज़ाहिर ग्रेनिच फैमिली का वक्त गुजरा. तो मैं आपके मुस्कुराहट से समझ रहा हूँ आपको क्या क्या फ्लैशेस आ रहे हैं इस वक्त, बट योर फेवरेट कोलीग्स टू वर्क विद और उनके साथ जो मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहें. आई थिंक मुझे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स लगते हैं ग्रेनिच में. बिल्कुल. फ्रॉम
गुल रहमान जो गेट पर होते हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सईद मुगल साहब के रूम तक जी, सबकी मोहब्बतें इतनी मिली हैं कि उसका नेमुल बदल कोई नहीं है. Very true. और when I come to Greenwich, so I need time to say hi and hello to everyone. जैसे because अभी I go to everyone. जैसे अभी शो से पहले हम सबसे बिल्कुल. मिलते मिलाते हुए आए. शो तो हमारा बाद में स्टार्ट हुआ, उससे पहले सबके पास जाना और हेलो हाई करना. आई कांट इवन थिंक ऑफ इग्नोरिंग एन इंडिविजुअल हियर. आप सबसे मिलते हुए जाते हैं और जो रिस्पेक्ट मिली है वो उसका क्या कहना है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है. यही लाइब्रेरी है, यही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा भी है, यही लाइब्रेरी में बैठ के काम भी किया है. और यही लाइब्रेरी थी कि जब काम से थक गए तो हमारे जो कामरान होते हैं ग्रीनिच के अर्दिल अजीज़ जो बड़े एक्टिव रहते हैं, वो कहते हैं यार कितना काम करोगे तुम लोग, चलो अब मूवी लगाते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं. तो इधर ही हमने जनाब छत पे चले गए तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और ग्राउंड में चले गए तो क्रिकेट खेल रहे हैं, या डेल्टन्स पे चले गए तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और ग्रीनिच की स्टाफ की टीम जा रही है और सईद साहब उसके कैप्टन हैं और हम सब वहाँ मौजूद हैं, और स्टाफ अगेंस्ट स्टूडेंट्स का मैच चल रहा है. और कभी यहाँ बैठे हुए हैं सारे मिल के और वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स चल रहा है, कभी वो टैलेंट हंट के प्रोग्राम की प्रिपरेशन हो रही है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड that you know we did here. So it's like under one roof we had a lot of fun. Exactly. And ये सारी मेमोरीज शेयर करने का मकसद ये कि जो हमारे आज की जनरेशन हैं दे गेट टू नो के व्हाट क्वालिटी टाइम वे स्पेंड. और ये जो हम बार बार एक जिक्र आपने अक्सर सुना होगा ग्रीनिच फैमिली का, तो उसके पीछे पूरी एक आइडियोलॉजी, एक पूरा दौर, एक पूरा वक्त साथ गुजरा है. और जिस टाइम की ऐसा रकील बात कर रहे हैं उस वक्त मैं काफ़ी मिनिएचर होता था, आज भी हूँ लेकिन उस वक्त थोड़ा ज़्यादा था. लेकिन वो सारे स्टेडियम में जाके आप और इमरान नुमान साहब जो ओपनिंग कर रहे होते थे, वो भागे रनिंग कर करके थक रहे हैं जी, पानी आ रहे हैं, बुरे हाल हैं, वहीं लेट जाते थे. बहुत सारी मेमोरीज. सर एट द सेम टाइम जहाँ हमने ये सारी बातें की, अब क्योंकि ज़ाहिर है एक दौर चेंज हो गया, कोविड आया, कोविड में आईटी पाकिस्तान में जो कि लोग बड़े रिलक्टेंट थे यूज़ करने के लिए, अब वो भी उभर के आए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह. आपका क्या पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ पे, और मैसेज टू ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो आईटी को इतना सीरियसली नहीं लेते? यार ये तो देखें पेंडेमिक आ गया है तो शायद हमने थोड़ा अर्ली इतना कुछ कंप्यूटिंग हमने स्टार्ट ले लिया, और हमने सारी लर्निंग और ट्रेनिंग सारी कंप्यूटर बेस्ड हमारी रही स्कूलों में और कॉलेजेस में. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ना होता, पेंडेमिक ना भी आता, तो भी आई थिंक 2025 में ये सब होना था. और ये लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता कि वो स्विच करते हैं. तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में भी हम काफ़ी पहले स्विच कर गए, और बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा कि नाउ वी ऑल हैव लर्नड हाउ टू इंटरेक्ट. Students have learned that how to submit their assignments on time with reliability and accuracy. And teachers have learned how to do assessment. That was a biggest problem when somebody is submitting you work and you have to check whether that work done by the student is his own work or not. So that was a major problem. So you insisting your student to keep the cameras on while test or examination, and you know taking those online exam and online tests. So yeah, it was an amazing experience. और I think अब पाकिस्तान में लोग सीख चुके हैं, और मैं भी क्योंकि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ब्रिटिश काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट ये आपके टीचर डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, तो I'm constantly part of it. I'm a member of that too. So learning never ends. True. So during this pandemic, I've done more than 16 certification courses. Wow. From British Council. और अभी भी एक चल रहा है, उसमें ये इंश्योर करते हैं कि टीचर इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, प्लेइंग his role. I mean, you have to make your presentation, you have to, justify that what are the techniques that you have been using to test whether your student has submitted his own piece of work, how you have been doing it. So you talk about the tools, you talk about the softwares and applications. तो बिल्कुल ये सब कुछ जो है बड़े अच्छे से रहा और बड़े अच्छे से हुआ. और अब मैं ये भी बात कहूँगा कि पाकिस्तान में अब हमें इस बात पे भी गौर करना होगा कि we'll have to keep ourselves engaged not into one field, into multiple fields. जी. So when it is high time when you should feel that one job is not sufficient. अब तो नहीं, right? बिल्कुल नहीं. And you must agree to it. So you have to be associated with multiple businesses. So at time I decided that too.
So I started doing many things simultaneously. So teaching in different colleges in town is one thing that I'm doing, and teaching to A-level students, O-level student, computer science is my subject, fine, that is one thing that I'm doing. And with that, I started my own business and with partnership with 3D marketing, और उसके थ्रू हम लोग जो है गुलमोहर सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, शंग्रीला के नाम से प्रोजेक्ट है और न्यू शेरशाह के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि M9 पे आ रहा है और ये नॉर्दर्न बाईपास के एरिया पे ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फार्म हाउसेस की लैंड्स हमारे पास होती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म हाउसेस हैं जो पिकनिक फार्म हाउसेस भी हैं जो हमारे दूसरे और जो है वो लाइव स्टॉक के लिए बताएं ग्रीनिच वालों के लिए क्या फ़ायदा है फार्म हाउस के लिए? ग्रीनिच वाले बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद डिस्काउंटेड। सारे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो सर के स्टूडेंट्स हैं अब अलमनाई बन के बड़ी बड़ी पोजीशन पे फार्म हाउस बनाए ताकि हम फ्री में पिकनिक पे जाएं सारे मामला तो। और सर यहाँ पे मैं बिल्कुल सर की बात को सेकंड करूँगा कि ये जो बात थी ना सर ने कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। एक IT एक्सपर्ट गोल्ड मेडलिस्ट के होने के बावजूद इस पैंडमिक में हैविंग सच तेरी सना भी करूं कसीदा मुर्शिद का और नाते हबीब पढ़कर जानिबे मंजिल में यूं खैरामा खैरामा चलूं और चिराग इस्लाम को रोशन मैं अपने लहू से करूं यूं इस्लाम पर आई स्याही को मैं दूर करूं मज़ा आ जाए जो काम आ जाए पलीद खून बहकर मज़ा आ जाए जो काम आ जाए पलीद खून बहकर राह हुसैन पर चलकर मैं तेरे क़ुर्ब में पहुँचूँ और शबो रोज़ तेरी जनाब में सजदे में करूँ जब करूँ बात सिर्फ़ तेरी ही बात करूँ राह दीन में तर्ज़ हुसैन पर सर देकर राह दीन में तर्ज़ हुसैन पर सर देकर जाते जाते भी यूँ सजदा बहुत तवील करूँ कि जब सजदा इमाम हुसैन का याद आता है कि इतना लंबा सजदा के करबला में किया अब हशर में सर उठेगा। एक सजदा वो था और एक सजदा वहाँ पर वो करेंगे उम्मत की बख्शिश के लिए यकीनन। तो बस अल्लाह तबारक व तआला इस निस्बत को कायम व दायम रखे और ये कि जो कुछ बैरिया टाउन में हुआ वो भी आपने देखा ये भी इंसानियत की एक मिसाल है और जो कुछ इमाम हुसैन आली मुकाम ने करबला में कर दिखाया वो भी इंसानियत की एक मिसाल है। तो बस अल्लाह इन निस्बतों को कायम रखे और अच्छों में हमारा शुमार रखे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आज आपका लाइटर नोट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही ज़बरदस्त था और ग्रीनिच आना, ग्रीनिच के लोगों से मिलना और सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उमर से तो बिल्कुल फैमिली वाला ताल्लुक़ है। उमर को पढ़ाया, उमर के भाई को पढ़ाया, उमर की बहन को पढ़ाया, उमर के बहनोई को भी पढ़ाया, इनफैक्ट ब्रदर इन लॉ को भी पढ़ाया बिल्कुल और खालिद साहब से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उम्मीद है कि बच्चे अगर कभी हुए तो उनको भी आप ही पढ़ाएंगे। ऐसा भी हुआ है ग्रीनिच की हिस्ट्री में कि वो एक थे बहमानी साहब के फादर एंड डॉटर गॉट ग्रेजुएटेड इन द सेम कॉन्वोकेशन, तो वो दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है और टीचर्स के बच्चों को भी पढ़ाया और ये सब होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बड़ा मज़ा आया वाकई। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। इट वाज समथिंग that I will remember till the end of my life. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज वो सारी मेमोरीज और ये जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी रिसेंटली गॉट एसोसिएटेड विद ग्रीनिच, जो हमारे रिसेंट स्टूडेंट्स हैं या जो लोग ग्रीनिच को 2, 4, 5, 10 साल से जानते हैं, अब हमारे जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं, पुराने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स ग्रीनिच के स्टार्ट से हमारे साथ हैं, तो जब आप उनकी बातें और यादें सुनते हैं तो जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रीनिच फैमिली, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स एन एक्सपीरियंस। जो जिसने फील किया है वही जानता है कि हमारी जो ये बॉन्डिंग ऐसी है वो क्यों है। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर फैकल्टी मेंबर। यू कैन ऑलवेज गिव अस योर फीडबैक इन फेसबुक एंड यूट्यूब। आपको किस फैकल्टी मेंबर का इंतज़ार है? उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया, मुझे तो बहुत आया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट, अनदर फैकल्टी मेंबर। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई और आज के एपिसोड में भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अलमनाई से कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी इनको क्यों इतना याद आता है और उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे, जानेंगे उन्होंने क्या कुछ यूनिवर्सिटी में किया। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम रुशना शमसी फ़ाज से और प्रोफेशनली शी इज़ एजुकेशनिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। रुशना, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी अपने अलमनाई को कॉल करता है, आप सामने हमारे बैठी हैं। सबसे पहले बताएं कि आप खुद अभी कर क्या रही हैं, एक अपना प्रोफाइल बताइए, फिर हम अपना डिस्कशन आगे जाएंगे। मैं जी माशाल्लाह पिछले 15 साल से एजुकेशनिस्ट हूँ प्लस कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही अपनी सर्विसेज यूटिलाइज़ करती हूँ विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। एट द मोमेंट आई एम एसोसिएटेड विद फाउंडेशन पब्लिक स्कूल विद देयर ओ लेवल कैंपस। अपनी सर्विसेज यूटिलाइज़ करती हूँ विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। एट द मोमेंट आई एम एसोसिएटेड विद फाउंडेशन पब्लिक स्कूल विद देयर ओ लेवल कैंपस। अच्छा, ग्रेट, माशाल्लाह। टेन्योर आपका ग्रीनविच का कौन सा था और कौन से प्रोग्राम में आप इनरोल थी, किस में रजिस्टर्ड थी? तो थोड़ा सा उस आई वॉज पार्ट ऑफ द 2006 बैच and I did my MBA in marketing from here. अच्छा, माशाल्लाह, 2006 बैच। ठीक है, 2006 में जो है ये ग्रीनविच में पढ़ रही थी। तो विच मोमेंट ऑफ डू यू स्टिल रिमेंबर, जो आपको याद आता है कि जी 2006 में मैंने ये कुछ ऐसा कोई काम कर दिया या ऐसे दोस्तों के साथ मजाक कर दिया या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ मैनेजमेंट से या कोई भी ऐसी बात जिस पर आपको हंसी भी आती हो और वो स्टिल आपको याद हो? एक्चुअली सारी बातें, कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट एक है दैट आई मेंशन लेटर, बट जो सबसे ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया आज हो रहा है यहाँ आकर के, क्योंकि वो पूरे एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट लाइफ का, बैचलर्स का, मास्टर्स का, गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूट, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, getting to know the management, the teachers, it's a life changing experience। जो बातें याद आती हैं अब वो उस ज़माने में डिफरेंट ग्रुप्स में स्टडी करना, प्रोजेक्ट्स करना, प्रेजेंटेशंस करना, डेडलाइंस मीट करना, उसमें लड़ाइयाँ भी होती थी, उसमें सीरियस किस्म की लड़ाइयाँ भी होती थी, फिर टीचर से कंप्लेन भी होती थी। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट आई हैव। और जो आपने बात करी कि सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी और मैंने एक IBA का डेयर टू स्पीक डिक्लेमिनेशन था जो कि ग्रीनविच ने उस साल जीता था, जिसमें कि ऑल ओवर कराची मल्टीपल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और हमने उसमें फ़र्स्ट पोजीशन ली थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और वो फ़र्स्ट पोजीशन मैंने ली थी, तो मेरे लिए एक वो बहुत प्राइड का मोमेंट है कि आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिड वेल ऑन दैट। ये छोटी छोटी बातें होती हैं आप स्टूडेंट लाइफ में करते हो और ज़िंदगी भर आपको याद रहती हैं। आप 2006 की बात करें, 2021 में हम बैठे हैं, कोई 15-16 साल गुजर चुके हैं और आगे भी आपको यही सारी बातें जो है याद रहेंगी और आप अपनी मेमोरीज़ को शेयर करेंगे। टीचर्स प्रोफेसर्स की बात करते हैं, आपने कहा कि डेडलाइंस मिलती थी और टीचर्स बड़े जो है वो बड़ा, उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता भी रहता था और कुछ जो है टीचर्स टेरर किस्म के होते थे, उनसे जो है खौफ भी आता था। सबसे पहले बात करते हैं कि विच वॉज द बेस्ट प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर? एक्चुअली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह द कॉम्बिनेशन दैट वी गॉट वर ऑल वेरी गुड, बिकॉज हमारे पास राहत मुनीर साहब थे, हमारे पास ताहिर साहब थे एंड मल्टीपल अदर टीचर्स। दुरानी साहब, उनकी डॉटर भी हमारे साथ उस वक्त थी। तो आई थिंक एवरी टीचर, एवरी इंडिविजुअल लेफ्ट देयर मार्क और सब ने बहुत कुछ सिखाया। वो डांटें भी अब याद हैं, वो भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। वो शुएब शमसी साहब was a very very fine instructor at that time, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो we had a great package। ठीक है, कोई एक प्रोफेसर का नाम यहाँ पर मेंशन करें जिसने बड़ा सपोर्ट किया। अगर आप पढ़ रहे होते हैं और आप कहीं जॉब भी कर रहे होते हैं, चलें जी अटेंडेंस देख लेंगे, मार्क्स कम आए हैं तो उस पर देख लिया, ग्रेडिंग का इशू आ रहा है। शुएब शमसी साहब वेरी अकोमोडेटिंग। ठीक है, अब जरा सा बात करते हैं हम कि उस ऐसे टीचर की जिससे खौफ आता है। एहसन दुरानी, जो मेरे ख्याल से सभी अच्छा ना सिर्फ ग्रीनविच में बल्कि माशाल्लाह दुरानी साहब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, इंस्टीट्यूट से वो वाबस्ता रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और स्ट्रेटजिक के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से वो जाने जाते थे। और मुझे याद पड़ता है कि भाई उनके स्टूडेंट जो है उनसे खौफ खाते थे। तो ग्रीनविच में दुरानी साहब का क्या रोल था? आपने उनसे पढ़ा तो कौन सा कोर्स पढ़ा और क्या टेरर उनसे आता था पढ़ते में और क्या? अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस जो था वो दुरानी साहब के साथ बहुत लिमिटेड रहा। मेरा एक्सपीरियंस ताहिर साहब के साथ बहुत अच्छा रहा। और वो जो सारी बातें आपने बताई वो खौफ वाली कि ब्रेक से लेट आ जाना, तो ताहिर साहब की क्लास में जाते हुए डर लगता था कि अब तो शामत आ जाएगी।
वो कोई ख्याल नहीं करेंगे कि खातून हैं या मेल हैं, वो सबको एक ही झाड़ पर मिल जाएगी। तो आपका कोई भी फीमेल स्टूडेंट होने का कार्ड प्ले नहीं करेगा और आप कोई भी बहाना लगा लेंगे जी वो नमाज़ पढ़ रहे थे या फिर कुछ असाइनमेंट कर रहे थे या ऊपर कंप्यूटर लैब में थे, कुछ भी काम नहीं आएगा। बस जो इज्जत होनी है वो होगी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। डिसिप्लिन और मेंटेन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। एक्टिविटी का एक आपने बता दिया डिबेट के हवाले से, उसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी? कैंपस का कौन सा एरिया आप मिस करती हैं? कैफेटेरिया पे आपने ज़्यादा वक्त गुजारा या दोस्तों के साथ या बंच ऑफ पीपल फ्रेंड्स के साथ आप निकल गई? तो कोई ऐसा इन हाउस कह लें, इन यूनिवर्सिटी कह लें, कोई ऐसा मूवमेंट आपने कोई दरो दीवार जिसको कहते हैं वो कैंपस का आपको याद? कॉन्सर्ट्स उस ज़माने में, उसके बाद तो आई थिंक डिक्लाइन आ गया इस किस्म की एक्टिविटीज़ के ऊपर। मूवी नाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी, वो हमने बहुत इन्जॉय करी अपने सब फ्रेंड्स के साथ। कॉन्सर्ट्स बहुत इन्जॉय करे, मल्टीपल डिफरेंट, क्योंकि डिबेट सोसाइटी से ताल्लुक़ था तो उस ज़माने में डिबेट कॉम्पिटिशन्स मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती थी बिकॉज मास्टर सेरेमनी भी होती थी, कॉलेज को रिप्रेजेंट भी कर रही होती थी। सो आई वॉज बेसिकली रनिंग द शो, तो वो एक बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक that helped me in my professional career with respect to becoming an educationist and then later becoming a corporate trainer. दोनों चीज़ों में मुझे जो exposure, जो confidence Greenwich ने दिया और जिस किस्म का room मुझे दिया that I could explore myself and personally develop myself and grow, I think I'm indebted for that. वेरी वेल सेड रुजना, आपने बहुत अच्छी बात बोली। कैंपस ही आपको पॉलिश कर रहा होता है। उस वक्त तो आपको ये लगता है यार कोर्सेज का बर्डन भी है और एक्स्ट्रा हमने जो है एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लिया, दोस्त आपके टॉन्ट कर रहे होते हैं, कहाँ फंस गए हो तुम, क्लास लो निकलो। अच्छा एक मज़े की बात बताएं, क्लास कभी बंक किया आपने? कभी सोचा यार ये क्लास है छोड़ें? कैंपस बड़ी आइडियल लोकेशन पर है, सीव्यू साथ में लगता है और बहुत सारी तफरी की जो है जगह है। बहुत दफ़ा एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स नाउ ऑल्सो कि मैं कभी भी कोई बहुत स्टूडियस नहीं थी। जो आप लोग कर रहे हैं ये सब कुछ बिन देयर डन दैट। क्लास भी बंक करी, असाइनमेंट्स भी लेट हुए, असाइनमेंट्स 11th आवर पे जल्दी भी बनाए, छापा भी मारा, बहुत कुछ किया। अच्छा एक और बड़ा पर्सनल सवाल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपके साथ आपके दोस्त भी होते हैं, तो कभी ऐसा लगा यार कि मुझे कोई लड़का पसंद आ जाए या इसके साथ मैं रिलेशनशिप रखूं या आगे जाकर जो है एक अच्छी सीरियस रिलेशनशिप के तौर पर, या कोई आपका कोई क्रश हो, बाद में वो क्रैश हो गया हो, तो ये वाला ज़रा मुझे बताएं कि ये इस कैटेगरी में आपने? आई थिंक वो सबके साथ होता है इन दैट एज, इन दैट टाइम पीरियड व्हेन यू आर स्टडीइंग। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कैंपस में मिलते हैं। कुछ टीचर्स आपको बहुत इम्प्रेस कर जाते हैं, जो बहुत सारे आपको नज़र आ रहा होता है, यू दे इंस्पायर यू एंड देन दे पर्सनली रियली गेट वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। इसी तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे एंड देन आई एम ऑल्सो मैरिड टू वन ऑफ अ कॉलीग हु इज विद मी, तो इसलिए तो वो अब जाके बट या लेटर थोड़ा सा एलिब्रेट करें ना, क्या हुआ, कैसे मिल रही? तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, लेकिन उस ज़माने में नहीं हुआ था, वो बहुत बाद में हुआ। क्लासमेट? जी कितने कोर्सेज साथ में आप लोगों ने पढ़े? हमने आई थिंक शुरू से लेके मास्टर्स तक हमने साथ में चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा उनको फंसवाया है बहुत जगहों पर, तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दैट, बट या अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम। रुजना बहुत अच्छा लगता है, आप एक कैंपस में साथ पढ़े भी हो, साथ आपने लाइफ पार्टनर भी देखा और उसके साथ सक्सेसफुली आप माशाल्लाह 15-16 साल आई थिंक आपकी शादी को हो गए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक। 2006 में आप यहाँ पर एनरोल थी, तो ये बड़ी खूबसूरत मेमोरीज होती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, आपने बता दिया सारा, हमने पूछ लिया। अगर ज़िंदगी मौका दे आपको, PhD प्रोग्राम करना चाहें या कोई कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स करना चाहें, GU का हिस्सा बनेंगे? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम ज़रा सा सवालात कुछ करते हैं और उन सवाल के जवाब आपने सिर्फ एक वर्ड में देने। जैसे इफ़ समवन इज़ गुड तो आपने बोलना है तो फारिग थे, इनको काम नहीं। इस तरह से ज़रा सा एक कैजुअल जवाब हो, ठीक है जी। सर राशिद इकबाल, जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से, स्टूडेंट की बड़ी इनके साथ एसोसिएशन रहती है हमेशा से, आज भी है, वन वर्ड फॉर है। आई थिंक मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरी है। राशिद साहब फ्रंट ऑफिस में होते थे और एक स्टेज से मैं आवाज़ लगाती थी,